आज हम बात करने वाले हैं नेपाल चाइना के बीच में एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है BRI। आप सबको पता है कि इंडियन मीडिया लगातार नेपाल और इंडिया के बीच में ताल्लुकात के ऊपर भी बात कर रहा है, साथ में जो है वो नेपाल चाइना के ताल्लुकात के ऊपर भी बात की जा रही है। तो आज हम बात जो करने वाले हैं वो नेपाल चाइना के ताल्लुकात के बारे में बात करने वाले हैं। नेपाल और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है जिसको नाम है BRI। तो नेपाल का कैबिनेट अभी BRI प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट कि नेपाल क्या सोच विचार कर रहा है BRI प्रोजेक्ट के बारे में। वीडियो देखते फिर आपके साथ बात करते हैं। Let's move on now and talk about China's Belt and Road Initiative. Nepal's Prime Minister Pushpa Kamal Dahal is set to visit Beijing beginning September 23rd, and speculation is rife that the BRI implementation plan may not be signed. Remember, both countries had inked the agreement on the BRI in 2017, but there has been little progress on implementing this project ever since. The Nepal cabinet is deliberating on the way forward. Like several other countries, will it also consider opting out? Ahead of Nepal's Prime Minister's departure to New York on Saturday, Nepal's cabinet is currently holding a meeting to approve the draft BRI implementation plan. If no consensus is reached, then the government will not be able to present it to Chinese officials during the Prime Minister's visit. Nor can any agreement be signed on BRI-related projects. On September 1st, the National Planning Commission Vice Chairman Min Bahadur Shrestha was entrusted with coordinating with various government entities and finalizing a draft plan on implementing the Belt and Road Initiative projects. And according to reports, this committee is now quietly laying the ground for the execution of BRI projects. But senior officials at the National Planning Commission, the Prime Minister's office, the Ministry of Finance and the Foreign Ministry, who had worked on the draft document, are reportedly yet to reach a consensus on this plan, based on which Nepal plans to sign a project agreement during the Prime Minister's upcoming China visit, which begins on September 22nd. Remember, Nepal and China signed the framework agreement on the BRI back in 2017, but the two sides have failed to reach an agreement on how to implement these projects. On Monday evening, former Prime Minister Sher Bahadur Deoba, accompanied by former Foreign Minister Narayan Khadka, met Prime Minister Dahal and advised him against signing the BRI. According to sources, Deoba said that Nepal had already rejected the draft of the BRI implementation plan in the past, and the country cannot afford to accept Chinese loans and execute projects under the Belt and Road Initiative. And for more details, our correspondent Saloni Munarka has been tracking the story on ground, and she sends us this latest report. Take a look. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal has a busy week of diplomacy and bilateral meetings ahead. The Prime Minister will be travelling to the US to address the United Nations General Assembly session on September 21st. Thereafter, the Prime Minister will fly to China directly to attend the Asian Games and will call on the Chinese President Xi Jinping and his Chinese counterpart Li Qiang. That's when the real talk, or the bilateral talk and the agreements will take place. The agenda of the visit ranged from the agriculture development to opening new checkpoints to hydropower development. But what really grabs the focus is the implementation of the BRI projects. The draft of the BRI implementation plan was sent to Nepal in the year 2020 to be signed, but the country hasn't still signed due to the concerns that were raised from various quarters regarding the security and the lack of clarity on the financial modalities. However, the Nepal cabinet is yet to decide on whether the Prime Minister during his visit to China will sign the BRI implementation plan or not. Saloni Murarka for WION World is One in Kathmandu, Nepal. WION World is One is now available in your country. Download the app now and get all the news updates on the move. वीडियो आप लोगों ने देख ली, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस टाइम पे इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि नेपाल की कैबिनेट बात कर रही है BRI प्रोजेक्ट के ऊपर और ड्राफ्ट बना रहा है। देखिए, नेपाल चाइना के बीच में बहुत बड़े अहम ताल्लुकात जो है वो कायम हो चुके हैं। आगे आने वाले वक्त में और भी काफी बेहतर चीजें होगी। चाइना ने नेपाल को ये बात की थी कि हम आपकी कंट्री में ट्रेन लेके आएंगे जो नेपाल के काठमांडू सिटी से लेके चाइना की सिटी तक जाएगी, और वो नेपाल चाइना की टूरिज्म सोसाइटी को और साथ में ट्रेडिंग सोसाइटी को काफी मुफीद होगा, काफी फायदा देगा उनको। और यही चीज नेपाल चाहता भी है
कि नेपाल और चाइना के बीच में अगर ट्रेड होती है तो वो दोनों को बेहतरी की तरफ ला सकती है और लेके जा सकती है, जिसकी वजह से नेपाल और चाइना के बीच में काफ़ी बड़े अहम ताल्लुकात हो रहे हैं। अभी इंडियन मीडिया का रिपोर्ट आप लोगों ने देख लिया। साथ में अगर नेपाल की बात करें, नेपाल की कैबिनेट की बात करें, तो हो सकता है कि वो लोग यही चाह रहे हो कि यार जल्द से जल्द हम बात करें। और इंडियन मीडिया का तो यही कहना होता है कि यार नेपाल जो है वो चाइना के ड्रैगन की अटैक में आ गया, अब चाइना नेपाल पे ये कब्जा कर लेगा, अब चाइना नेपाल पे वो कब्जा कर लेगा। इंडियन मीडिया की मुख्तलिफ राय थी जिसकी बिना पे हम आपसे बात कर रहे थे और आपके साथ शेयर करें कि देखिए चाइना नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना भी चाहता है, बट वो कई मामलात पे नेपाल के साथ बात नहीं करना पसंद कर रहा है। और वो कौन से मामला थे? वो थे बॉर्डर इश्यूज के ऊपर जो नेपाल और इंडिया के बीच में चल रहे, तो उसके ऊपर चाइना ने नेपाल का साथ नहीं दिया और ना वो इसके ऊपर बात करना चाह रहा है। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।